वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्राइलॉजिक ट्रेडर्स। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द स्टॉक्स जिस पे हम ईयरली व्यू दे रहे थे, पार्ट 2 उस वीडियो का। सो ईयरली व्यू ऑफ द स्टॉक्स पार्ट 2, इसमें आज हम बात करेंगे 7 to 8 नए स्टॉक्स की, जो हमने कहा था कि और भी लार्ज कैप्स है, बट वो लार्ज कैप्स को हमने कवर नहीं किया था अपने पिछले वीडियो में। बट टुडे वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस देम टू यू। तो लेट अस बिगिन। देखते हैं कि पहला हमारा स्टॉक कौन सा होगा। टू बिगिन विथ इट इज कैनरा बैंक, कैन बैंक, जैसे भी आप समझे। इसमें ये एक चैनल जैसा आपको दिख रहा है, प्लीज फोकस ऑन द ब्लैक लाइंस, ब्लैक थिक लाइंस। ये एक चैनल था जिसमें ये परफॉर्म कर रहा है। वी आर लुकिंग एट मंथली टाइम फ्रेम। सो ये हम लॉन्गर टर्म के हिसाब से देख रहे हैं इन स्टॉक्स को। So since it is a yearly view, we have to use the monthly time frame. So यहाँ पर ये एक चैनल में ही अप डाउन कर रहा था। यहाँ से चैनल फॉर्म हुआ, रेजिस्टेंस लिया, वहाँ पर सपोर्ट लिया, अब उसका ब्रेकआउट किया है। सो अ लॉन्ग टर्म व्यू ऑन कैन बैंक इस चैनल का जो पूरा विड्थ आएगा, दैट वुड बी द टारगेट जो हमने मार्क किया हुआ है 715, बट दैट इज फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। इफ यू रियली वांट टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्गर टर्म एज एन इन्वेस्टर, तो that would be the perspective. 715 is the level. Current market price is around 460, so that is a very huge opportunity from a longer term perspective अगर हम देखने जाए तो। So overall वो 54% return that would be. We'll talk about a little shorter term. तो उसमें क्या होगा, that current scenario के हिसाब से 550 is the first target from here on. 550 that is looks like achievable in the next year, क्योंकि ये yearly view है, तो this target looks like very much achievable in the coming annum, and इसका overall जो ROI prediction है that is around almost मोटा 20%. if we get a little dip here and there like 455 we can just see that if we get around 455 level, so we will get more than 20%. It comes to around 421%. so if we get any dip around this, then still it is more than 20%, which is, I think that is just good considering an annum. You beat a lot of things. You beat the bank FD rates or in any kind of interest rates. You beat the bonds. You beat the mutual funds to some extent. So it is nice. That would be a good performance. So that looks likely. That is about Can Bank. And longer term perspective and longer term target we have already disclosed. Next is Eicher Motors. We are talking about, there's a lot of things here, so we'll remove that. So we are talking about auto sector here. Recently it has breached this all-time high level. It did a breakout and now it is testing back those levels. Now we really have to see that Eicher sticks to these levels, and there is another possibility of this. Okay, this was a weekly flag ka breakout. Okay, if you see this, something like this, whatever. So if I use fib extension here and try to find out the target, then we get it around, the first target comes to around 4566, and a long-term target in this would be, if you consider, it comes to around, that would be around the same levels that comes. Another thing is what we could do is we could take the depth of this triangle and use that, use that as a target from here. So all that target comes to around this points. We'll just mark them and see.
So if you see at current levels, if we are looking at them, then if we invest at this current level, so let us see what would happen. Although you could see a big bearish candle, but if we invest kind of at a current levels, then still it is 11.75%. And the second target, it gives you around 17 to 18%. Now there is another thing. If we go to lower time frames, you see if we get, let me delete this, अगर हमें यहाँ पे एक dip मिलता है, I'm sorry, around this levels, ठीक है, जैसे कि ये एक साइडवेज मूवमेंट में है, अगर हमें यहाँ पे एक करेक्शन मिलता है एंड ये लेवल की एंट्री मिलती है फॉर एग्जांपल, तो हमारा जो ROI है दैट कम्स टू अराउंड 13.68, ऑलमोस्ट 14%, एंड या ऑलमोस्ट 20% द सेकेंड टारगेट. तो इसमें शॉर्टिंग is not a good option, but yeah, at dips investing would be a good option if we could get any levels around 3800 or something around 3700. for example, अगर हम मान ले कि 3700 में हमें एंट्री मिल जाती है, नियर अबाउट 3700 if we get an entry, जैसे कि around this point, see, then the target becomes, and the ROI becomes pretty much decent. 17% is the first target and 23% is the second target. So long term जो है yearly जो view है उसके हिसाब से Eicher Motor is a good bet to invest on, considering automobiles. Talking about that, हम next अपना stock जो है consider करेंगे, that is Maruti Suzuki. Maruti Suzuki is also doing pretty good on higher time frames. If we see, इसका target is going to be very much decent. See, the targets that we get, we have already marked them for you, considering fib extension and considering this levels. ये Maruti, if it sustains about this breakout, ये जो एक monthly level का resistances का breakout हुआ था, Maruti has to sustain above that 9700 750 levels, because यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन चल रहा है इन smaller time frames. So if it retests this point, 9700 800 odd, and it sustains from here, and it bounces back from here, reverses from here, then going forward the target in Maruti is this. First target is 13,800. अगर हम इसे देखते हैं इस पर्सपेक्टिव से, तो ROI कैलकुलेशन आता है समवेयर अराउंड 38%, ऑलमोस्ट 40%. अगर हम what levels we are looking at, if we are looking at getting it around 9,900 or 9,800, so 40% ROI can be possible in Maruti, and this looks very much likely. So Maruti is doing good, has been doing good, is the leader in the industry that already. So it is a good bet. We do not think कि यहाँ पर ये इसका प्राइस जो है वो 10,000 रुपया है. We think about the ROI, whatever the capital you invest in it, maybe it is only 10,000 or maybe it is 1 lakh rupees. That depends upon your personal capacity. लेकिन उसमें जो ROI का जो caliber है, that is around 40%, which is very great, I would say. Next, we'll talk about everybody's darling, that is Tata Motors. Okay. So Tata Motors maybe targets are very much good, pretty decent, because ये एक मंथली जो इसने सेम एज आइसर की ट्रेंड लाइन जो है रेजिस्टेंस की उसे ब्रीच किया था, इट इज काइंड ऑफ इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऑन द अपसाइड. सो इट लुक्स लाइकली कि 1000 लेवल अचीव कर जाएगा. देयर आर टू टारगेट्स, 968 एंड 1130. It looks like 968 and 1000 looks very likely on the cards for Tata Motors. The way it has been going, it is just way too strong. Any dips could be used to buy,
और उसे हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ROI अगर हम देखेंगे तो कितना हो रहा है 23% फॉर द फर्स्ट टारगेट, और अगर हमें कोई भी डिप मिल जाए तो दिस विल बिकम डेफिनेटली 25%, विच इज प्रिटी मच डिसेंट. एंड अगर हम लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव देखें देन the target of 1130, which is just whopping 44%. So it has a great potential, and I think it is a good bet for investing from a longer term perspective. But yearly view अगर हम देखने जाएं तो 968 this 1000, it seems likely that it would test this mark. इसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर की. तो IDFC फर्स्ट बैंक again is our pick, and it has also performed really very well. ये ब्रेकआउट हुआ था यहाँ से मंथली टाइम फ्रेम की जो ट्रेंड लाइंस है उनका, और यहाँ से अगर हम देखें तो इनके टारगेट्स आर लाइक 100. दिस प्रीवियस ऑल टाइम हाई इज द फर्स्ट टारगेट, और 112.5 दैट इज द सेकेंड टारगेट. अगेन हम ये चेक करेंगे ROI टर्म्स में क्या हमें देखने को मिलेगा. So first target would fetch you roughly around 16% ROI, and second target would fetch you around almost 30% ROI. So if you get anything like 85, 86, 86.5, it will fetch you around 30% ROI. So that is very likely. और HDFC फर्स्ट बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, करंटली आउट परफॉर्म कर रहा है काफ़ी मेजर बैंक्स को, बीइंग अ स्मॉल कैप, बट काफ़ी मेजर बैंक्स को उसने आउट परफॉर्म किया है, और यही अगर चलता रहा देन डेफिनेटली दिस टारगेट्स आर वेरी लाइकली. एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडसइंड बैंक की. काफ़ी टाइम से इंडसइंड बैंक हैज़ बीन अंडर परफॉर्मिंग एंटायर बैंक निफ्टी सेक्टर में. कोटक बैंक एंड इंडसइंड आर द टू दैट हैव बीन अंडर परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली आफ्टर HDFC. बट अभी इट लुक्स लाइकली इन मंथली बहुत ही अच्छा मूव आ रहा है. एंड यहाँ से अगर हम देखें फर्स्ट टारगेट इज अराउंड 60, व्हाट इज दिस 1826 levels, and the next target would be previous all time high, that is 2038. अगर इसको हम ROI terms में देखें from current market price, then the ROI is very great. For the first one it is 11%, and for the second one it is 24%. So that is a great ROI. If we consider ये बहुत ही अच्छे और बहुत strong momentum में है, it looks very likely to achieve the previous high 2040. ये लेवल ये ज़रूर टेस्ट करेगा, that is what we think. और लॉन्गर टर्म की अगर हम बात करें तो उसका एक बड़ा टारगेट हमारे पास 2391, that is almost 2400 का भी है, but that is from a longer term perspective. We'll be talking about that separately in some other video. और इसके बाद हम बात करेंगे Infosys, another tech giant. Last time we talked about TCS, this time we are talking about Infosys. और इसमें भी after this breakout you can see एक मेजर टारगेट इज इट्स प्रीवियस ऑल टाइम हाई विच इज 1950 लेवल्स. अगर करंट मार्केट प्राइस से अगर हम इसे देखें देन इट इज 27.5% ROI. यहाँ पर एक खाली एक छोटा सा, नॉट छोटा सा, बट यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस हर्डल है एट 1660 लेवल्स. बट इफ वी टॉक अबाउट फ्रॉम ईयरली पर्सपेक्टिव 1950 ये जो ऑल टाइम हाई है इसे वो टेस्ट करेगा और हो सकता है उसे ब्रीच भी कर जाए. सो करंटली दिस इज आवर टारगेट. इसमें ये एक ही टारगेट हम लोगों ने कंसिडर किया है, कंसिडरिंग दैट टेक स्टॉक्स हैव बीन अंडर परफॉर्मिंग फॉर क्वार्टर सम टाइम. तो यहाँ पर ये जो है प्रीवियस ऑल टाइम हाई को अपने ज़रूर टेस्ट करेंगे इन दिस ईयर. सो 1950 is the level that Infosys might be looking at, and that gives you a whopping 27.5% ROI. And last but not the least for the market, that is मोटा भाई रिलायंस का टारगेट it is ये एक चैनल जैसा है जिसमें if there are two possibilities and situations that could happen is, एक अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके रिलायंस नीचे आ जाता है then it might very well go down to test this levels, all these levels 2400,
देन 2200, ओके। बट यहाँ से अगर ब्रेकआउट कर जाता है देन वी हैव अ स्कोप फॉर अस द ब्रेकआउट। ये जो टारगेट आता है इस चैनल का दैट कम्स टू अराउंड 3275 और 3300, विच इज परसेंटेज टर्म्स में देखो तो 26% ROI इट विल फेच यू। सो दैट इज अगेन अ ग्रेट नंबर एंड एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम रिलायंस। बट जैसा कि मैंने फर्स्ट कंडीशन में बताया है, व्हाट इफ it takes a resistance here and comes down, then we have to wait and see what it does with these levels, 2400 and later 2200s, all these levels, because it has to come down and test these levels if it corrects। अगर correction आता है तो इन levels को test करके वो वापस जाएगा। See, Reliance यहाँ से बहुत ज़्यादा correct नहीं होगा because it has already been in correction and underperforming for quite some time now। तो ये नहीं होगा कि यहाँ से रिलायंस आएगा एंड डायरेक्टली इट इज गोइंग टू टेस्ट 2000 लेवल्स एंड ऑल, देयर आर मेनी सपोर्ट्स अलोंग द वे। सो अगर यहाँ से वो 2400 या 2200 लेवल्स को टेस्ट करके वापस से रिवर्स करता है, देन द टारगेट एंड इट्स पोटेंशियल इज गोइंग टू बी ह्यूमंगस, बिकॉज एक लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव है कि रिलायंस इज गोइंग टू गो टू 3300। एंड अगर ये इमीडिएटली ब्रेकआउट कर जाता है देन इट माइट वेरी वेल सी दिस लेवल्स इन दिस ईयर। सो दैट्स इट, यही थे हमारे स्टॉक पिक्स फॉर यू ईयरली, जिनका व्यू हमने आपको बताया, टारगेट्स हमने आपको बताए। और ये इस वीडियो का पार्ट 2 था। पार्ट 1 में भी हमने काफ़ी सारे आपको लार्ज कैप्स और मिडल कैप्स के कॉम्बिनेशन में बताई थी कुछ 6-7 स्टॉक्स, और इस बार हम 7-8 स्टॉक्स लेकर आए हैं। इसी तरह हम आगे भी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम काफ़ी अलग अलग प्रकार के स्टॉक्स के बारे में बताएंगे। समटाइम वी आर गोइंग टू मेक वीडियो ऑन स्टॉक्स दैट गिव यू गुड डिविडेंड्स। तो ये सब चलता रहेगा। फिलहाल के लिए तो हम इजाज़त लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और नेटवर्क में, एंड प्लीज़ कीप कमिंग बैक।